Pakistan is the only country that was established in the name of Islam. Before that, Pakistan used to be the part of United India. If we go back in the past a while, we will know that United India was famous all over the world due to its unique food and spices. When Pakistan became independent, those foods now come to be known as Pakistan's unique foods and spices. Do you know, in 2018, over 6.6 million people visited Pakistan. And when they were asked which thing makes them to visit Pakistan, 86% of people answered were the unique food of Pakistan. An interesting fact is that most people of Pakistan actually gain weight during Ramadan, despite the fact that it involves fasting from sunrise till sunset for a month. This is due to the wealth of food on offer at iftar. Today, Pakistani food can be found and loved all over the world, from New Zealand to the Caribbean. The craze over Pakistani food can be seen. But what is the reason according to the Dawn News? Doctors have forbidden to eat some unique food of Pakistan. What is the reason? Are we going to lose some unique and tasty food because of this? As we already mentioned, it was subcontinent which has always been recognized by its unique food. Most people say Indian foods. In fact, Indian food and Pakistani food are two different things. If we start from the beginning, every Pakistani starts their day differently. Most people in breakfast eat paratha with lassi or butter. Some people used to eat roti with boiled eggs, sheermal with tea, kulcha, keema, seasonal fruits, milk, honey, etc. A typical Pakistani lunch consists of meat, curry or shorba, depending on the region, along with the carbohydrates such as dal chawal is among the most commonly taken at lunch. About dinner, the dishes include nehari, Kabuli pulao, karahi, halim, halwa puri, mutton korma, saag and biryani. When we talk about the unique food of Pakistan, here the list varies because unique foods are cooked on the special occasions. The most famous dish that comes to our mind about Pakistani is none other than biryani. Biryani can often look like a dish of pulao, but from the start, the two are actually quite different. Pulao has all of its ingredients fried together in oil, mixing all the flavors in each bite. Whereas, each spoonful of steamed biryani can be unique, ingredients are separate. The biryani's texture and shape also varies depending on the region, like biryani of Karachi. Biryani of Karachi is a bit different from other regions like Lahori biryani. But biryani of Karachi is famous all over the world and often includes in unique foods of Pakistan. Another famous dish like biryani, there comes pulao. It also consists of rice and other spices and ingredients. This list continues with karahi. The dish takes its name from the black, iron, scoop-shaped pan. Usually a karahi curry is made with goat, but also commonly with chicken or even shrimp. Nehari has its own importance, value and taste. Halim is an incredibly hearty dish with a combination of barley, local wheat varieties and chana, chickpeas. This dish shows the influence on Pakistan that comes from the Middle East, and people have been enjoying Halim here for centuries. If there's one special Pakistani breakfast that is loved by all, it would have to be halwa puri, known for causing feelings of extreme satisfaction even to the point of laziness for the remainder of the day. Halwa puri is one of the most common breakfasts you'll have in Pakistan. While halwa puri is a special beloved breakfast food in Pakistan, paratha is the most common everyday breakfast. For a classic meal of Punjab cuisine, it would be mandatory to include at least one dish with mutton. And it's likely to be a korma curry. Mutton korma is hearty and rich, including incredibly tender chunks of sheep or goat meat and a dark red blend of spices. Another dish commonly found throughout the Punjab and Sindh provinces of Pakistan is saag. The dish's name simply means mustard greens, and there can be any number of other ingredients cooked along with it. Chapli kebab is not only best of all Pakistani food, but is one of the world's greatest foods, sometimes known as Peshawari kebab. This is a dish that is literally pilgrimage worthy.
Assalamualaikum viewers, this is Mohammad SABIH, the student of Media Science at Greenwich University. As much as the culture of Pakistan is rich, even richer than our unique foods, in fact our foods are our culture. Viewers, can you take a guess about this yummy, scrumptious, mouth-watering food street? Obviously, this is none other than Hussainabad Food Street. अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा अब्बासी। जब मुस्तफ़ा अब्बासी साहब, आप मतलब खाने में क्या पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा तो बिरयानी पसंद है। बिरयानी पसंद है? जी बिल्कुल। ऐसा क्या ख़ास है बिरयानी में जो आपको इतनी पसंद है? बिरयानी में ऐसा तो कुछ ख़ास नहीं है, बस पसंद है। बस पसंद है। अच्छा, मतलब कढ़ाई क्यों नहीं? दूसरी भी डिशेज़ हैं पाकिस्तानी, सज्जी हो गई, कढ़ाई हो गई, कोरमा हो गया, निहारी हो गई, बिरयानी ही क्यों? बिरयानी शुरू से ही खाई है तो इस वजह से पसंद है। अच्छा, ऐसी कौन सी डिश है जो मतलब आप ट्राई करना चाहेंगे पाकिस्तानी, जो आपको मतलब पसंद है और मतलब ट्राई करने का सोच रहे हैं कि आगे ट्राई करें? सज्जी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो बर्गर और जो बाहर के जितने भी हैं पिज़्ज़ा वगैरह, उन सब से मतलब किस तरह कंपैरिजन करेंगे बिरयानी के बारे में, पाकिस्तानी खानों के? कंपैरिजन करेंगे बिरयानी, एक तो चावल डलना उसमें, ऊपर से चिकन है और मतलब ये यूनिक जायका रखता है पूरे पाकिस्तान में। जायका यूनिक है। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? उबैदुर रहमान तनोली। उबैदुर रहमान साहब, खाने के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल। आपको क्या पसंद है खाने में? आई थिंक सब कुछ ही पसंद है, जो कुछ मिल जाए हर चीज़ खाना चाहिए। ऐसा कौन सा पाकिस्तानी खाना है जो आपको मतलब आप बार बार खाना चाहेंगे, मतलब आपको काफ़ी पसंद है? यहाँ की बिरयानी। बिरयानी। अगर मैं ये पूछूं कि बिरयानी क्यों, ऐसी क्या खास है उसमें? शुरू से खाते हुए आ रहे हैं ना, तो इसलिए बिरयानी जो है ना ज़्यादातर हमें पसंद है। अच्छा, बिरयानी मतलब अगर बाहर के खाने अगर देखा जाए, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, तो बिरयानी उनसे कैसे मतलब कंपैरिजन है उनका? नहीं, फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं। मतलब हमारे देसी खाने और स्पाइसी ऐसी कोई डिश जो आप खाना चाहें और आपने अभी तक ट्राई नहीं की हो? ऐसी कोई डिश यार कुछ कह नहीं सकते। अक्सर ऐसे पाकिस्तानी और भी खाने, सज्जी हो गई, कढ़ाई हो गई, आई थिंक सज्जी ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया। मैं आज एक रेस्टोरेंट पे हूँ लाहौर के, बहुत फेमस, जिसका नाम है चस्के ही चस्के। नाम वैसे ही आपने कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। एक्चुअली ये जो नाम है ना, ये लाहौर को एक बहुत अच्छा देता है फेस पे। देखे ना, ये हम लाहौरी या पंजाबी हमारी लैंग्वेज है, तो प्यार से हम इसको एक जो भी डिश बनाए हम उसको चस्के यार, चस्का आना चाहिए इस चीज़ में। डिश तैयार हो, पता चले यार ये चस्के वाली डिश है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने इस रेस्टोरेंट का नाम रखा हुआ है चस्के। वैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा चस्के और अच्छी डिश कौन सी आपकी जो फेमस और जो यूनिक है? हर चीज़ अच्छी है हमारी जो बेस्ट है चिकन कढ़ाई है हमारी, तो वो भी हमने लगवाई है आपके लिए, तो वो भी आपको दिखाते हैं अभी। सही। और आप इसके अंदर कौन कौन से स्पाइसेस यूज़ करते हैं, मतलब कि कोई स्पेशल मसाले हैं? जी स्पेशल होते हैं, हमारी अपनी रेसिपी है, मेरे वाले साहब की उनकी बनाई हुई रेसिपी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाला है, जैसे मिर्च हो गई, ये तो सिंपल है ना, तो एक हमारी एक अलग होती है, एक सीक्रेट वो भी है। तो फिर ये रेस्टोरेंट आपने कब से खोला हुआ है, मतलब कि कब से? हमें 25 साल हो गए हैं इसमें, 25 साल पुराना हमारा रेस्टोरेंट है। एक हमारा रेस्टोरेंट वहाँ पर है, दूसरी जगह पर उसका भी नाम यही है, चस्के एंड फिश कॉर्नर, और ये वाली शॉप है ना, इसको 4 साल हो गया। सही। और तो फिर इसके अंदर जो आपके टिक्के वगैरह मैंने देखा, आपका बारबेक्यू बहुत अच्छा है, तो फिर इसके अंदर और मेरे मुंह में बिल्कुल पसीने आ रहे थे कि इतना अच्छा बारबेक्यू, तो फिर वो भी मैं टेस्ट करूंगा अभी। तो फिर उसके अंदर आप कुछ स्पेशल करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया ना, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाले हैं, मेरे वाले साहब की अपनी रेसिपी है। अच्छा, आपके वालिद साहब ने खुद मसाले वगैरह तैयार करके? हमें भी नहीं पता, ही सीक्रेट है। अच्छा, माशाल्लाह से। थैंक यू फॉर द वीडियो। जी, जैसे कि अभी आपकी फ़िश मैंने देखी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मसाले लगे हुए दिख रहे हैं। आप पहले देखें, अपनी पब्लिक को बताएं।
शायद हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, पास आइएगा सर थोड़ा। ये चीज़ है जी हमारे पास, ये फ़िश होती है जो बड़े साइज़ में होती है और मसाले इतने लाइट भी होते हैं हमारे पास। कोई पेशेंट भी हो तो वो भी इसे इजीली खा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये फ़िश है हमारे पास। इस फ़िश के अंदर आपके पास क्या क्या वैरायटी है? हम कालारू होती है हमारे पास, बाम फिश होती है, पापलेट होती है, काफ़ी रेट में फिश होती है, फिंगर फिश होती है। ये जो मछली होती है बेस्ट हमारा ज़्यादा जो हमारी चलती है वो ये है कालारू, जो ये सबसे ज़्यादा आपकी इन होती चलने है वाली फिश होती है। और इसके अंदर आज जो क्या कहते हैं, इसका जो टेस्ट करते हैं तो लोग, तो उनके क्या कमेंट्स होते हैं इसके बारे में? हमें 25 साल हो गए काम करते हुए, कभी भी ऐसा नहीं लगा किसी ने कंप्लेन नहीं की हो। हमारे कस्टमर खड़े हैं, फिश खाने आते हैं हमारे पास, और आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं की फिश की कि फिश में कोई मसला है। ठीक है, मगर मैं जब फिश खाता हूँ तो मुझे ना कांटों से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है फिश इसी वजह से हम बड़े पीस लेके आते हैं। इसमें कांटा बड़ा होता है, इसमें कांटा बड़ा होता है और कांटे कम होते हैं ये जी। तो फिर ये इजीली जो आपके कस्टमर्स हैं वो इजीली खा लेते कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। सही। भी हमने बहुत आपकी मज़ेदार किस्म की बोटियाँ देखी हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये देखें आप, ये टिक्का बोटी है जी, और ये ड्रम टिक्के हैं। टिक्का बोटी एक तो ये तो सिर्फ मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये लेग पीस है, तो इस तरह का ये थाई की बोटियाँ भी होती हैं और इसमें हड्डी वाली बोटी भी होती है, उसको बोलते हैं चिकन टिक्का बोटी जी। ये होती है चीज़, और ये होता है ड्रम। मगर मैंने जहाँ तक देखी है ना वो सिर्फ एक बोटी होती है, या फिर इसके अंदर आप कौन कौन से मसाले इस्तेमाल करती हैं? ये भी एक मरीज़ खा सकते हैं? ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सीक्रेट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाले हम यूज़ करते हैं इसमें, जैसे टिक्का में। वैसे ये मरीज़ खा सकते हैं? अगर मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इनको है। कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। हमारे मसाले होते हैं बिल्कुल लाइट होते हैं, इतने भी लाइट नहीं। अगर कोई बोले कि हमें थोड़ा स्पाइसी खाना है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होटल का नाम भी चस्के है, तो चस्के आ जाएंगे उनको। ये मैं तो माशाल्लाह से ये 25 इयर्स पुराना जो है होटल है, और ये इतना पुराना रेस्टोरेंट माशाल्लाह से आज तक एक बहुत ही खिला रेस्टोरेंट है। तो मैं आपको भी प्रेफर करूँगा कि आप इस रेस्टोरेंट में लाजमी आएँ और ट्राई करें कि इसके चस्के कैसे चस्के हैं। इंशाल्लाह जी ज़रूर, हमारे जो रेस्टोरेंट में चस्के मिलते हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं। चलिए इंशाल्लाह अभी मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको कमेंट्स में बताता हूँ कि कैसा है जी। आज अब ये मैं टेस्ट करने लगा हूँ कि टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसी है टिक्का बोटी। बहुत ही ज़बरदस्त बोटी है, और मुझे तो खैर बहुत मज़ेदार लगी है। पहले ही मुझे इसको देख के जब ये बन रही थी मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि मैं टेस्ट करके देखूँ कि कैसी है। तो माशाल्लाह से मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मैं आपको ही प्रेफर करूँगा कि आप इधर ज़रूर आएँ और खाएँ और इन्जॉय करें और चस्के ही चस्के लूटें। This list never ends. That's why people from abroad are rapidly attracted to Pakistan and the number of visitors is being increased day by day, but a big problem raised. The Express Tribune published an article that says, according to a 6-month-long study conducted by 2 teachers and as many students at Institute of Environmental Sciences at the University of Karachi, the presence of heavy metals in spices mixes can cause health risks. The study was initiated by the institute using its own finances. The heavy metals that were found in the locally available spices can cause cardiogenic effects, which cause heart attacks, said Professor Dr. Mozam Ali Khan, who supervised the study along with Dr. Amir Alamgir. The metals and their high concentration also cause liver issues, fat issues, joint pains, and even cancer. They found these spices are dangerous to health and can cause typhoid as well. They advise people not to use them. But the spices are the most important ingredient of these unique foods. So should they not be consumed? The answer is that not all spices are so dangerous. Only some of them have impurities. Most of them are made with full purity, but here government or food control authorities can take control of companies that are making dangerous and unhealthy spices, because it is very important to save these unique foods. Government has to make sure that all the spices and foods are made with purity and they are safe for health. That will ensure people from abroad that Pakistani food are full of health and they can pay attention to it.
And it is our responsibility as well to be aware of these kind of unwanted things happening in our society, and we have to raise that issue.